नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे बीच में तीनों आंटी जी उपस्थित हैं। मेरे साथ अनुजा मारवा आंटी जी उपस्थित हैं, मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी। हम दोनों तीनों आंटी से एक विषय पे उनके भाव जानेंगे। जय गुरुजी तीनों आंटी। जय गुरुजी वासन अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जय गुरुजी तीनों आंटी। प्रणाम गुरुजी महाराज को और गुरुजी की संगत को भी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। तीनों आंटी ने हमें पिछले सेशंस में बहुत अच्छे सेल्फ रियलाइजेशंस के ऊपर टीचिंग्स दी हैं। सो वी नीड टू नो सो मच मोर फ्रॉम यू तीनों आंटी। सो टुडे वी वुड लाइक टू नो what are the tools you consciously use to arrive being where you are today। मतलब कि जिस स्पिरिचुअल लेवल पे आज आप हैं वहां पहुंचने के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस अपनाए, क्या क्या तरीके अपनाए। सो प्लीज हम सबको भी गाइड करिए ताकि हमारा भी स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा हाई हो सके। प्लीज तीनों आंटी। वेरी राइट। जय गुरुजी महाराज। Anuja, when you embark upon this journey, the most difficult thing, the most difficult question that you face is within yourself, or where am I going and how do I get there? So, Nato, if I look back on my journey, I can have an idea कि मैं फला टाइम पे मैंने ये जर्नी शुरू की थी, फिर all of these things happened and that led to this. But at that time, you're left in the dark. You're left in the dark. Why I say is that the soul craves the soul knows that there's a conscious hole inside me. I need to fill it, but doesn't know how. And you know that the answer is God. You know that the answer is knowing the self, but sometimes you don't even know what the self is. God ko to abhi, we haven't even touched that point that is called God. But I read somewhere beautifully, they said that religion is for people who are trying to avoid doing the wrong things, who haven't been to hell. Religion is for people who haven't been to hell. Spirituality is for people who are already in hell. So, when the insides are craving a path that is deeper, and there is a path, but you don't know how to get there, that is when your real path starts. And if I was to sit here and say that, okay, if these are the things you can all do, you will get there. It'll be literally like putting a camel through the eye of the needle. It's easier to do that, but it's very hard for me to sit here and say that, okay, these are the tools that will work for you or whoever. I feel your paths, we are all designed very differently. There is a human design which is very, bespoke to you. और उसके हिसाब से गुरु महाराज हमारा पाथ डिजाइन करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि अगर सपोज मैं सोचती हूँ कि मैंने मेडिटेशन की, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने रेकी की, फिर मैंने ऐसे किया. So we think of only the spiritual things that we did, the realm of spirituality. But what we don't take into consideration is what were the circumstances of our life? What did He create for us to deal with? And I feel that when you're on the path, everything is the path. Whether it is your relationships, or it is a situation that you're facing in your life, or it is any disease, or it is the actual spiritual path that you're taking.
the fact that I'm sitting here doing this is my path. Because I have always tried to run away from being judged in a way. I never wanted to do this. I didn't want to be in that, in the eyes of the people like this, because there is a part of me inside that says, oh, well, there's going to be the good with the bad, or the bad with the good. So इससे better यही है कि मैं इससे दूर ही रहूं, because I can't handle that. This is the path. The I'm sitting here is the path. जो मैंने प्रोटेक्टिव शील्ड पहनी हुई थी ना, वो मेरे को उतार के फेंकनी पड़ी है. And we didn't decide that this is all going to come out like this. It was all his planning. So I feel that the first and foremost thing that I would like to say is that it is a path of total surrender. मेरे लिए क्या work किया may not work for somebody else. And people say that meditation is the result of the path. When your path ripens, वो इतना पक जाता है फल, then you're constantly in a state of meditation. It is the result, but you can't begin only with meditation. और मेरे को कई बार ऐसे भी लगता है कि गुरुजी महाराज शायद इसीलिए meditation से मना करते होते थे, because all it does is it just strengthens your ego. Yes. So the more you do, the more you think, oh, I think I'm in control. I think I'm in control. Yeah, I do it. And I've done it. I've made that mistake. I've meditated for many, many hours at a stretch. But you know what? How Guruji Maharaj, he worked out my path was that I was, rather than taking me away from people, he threw me more into people. जितना मैं ये कहती थी कि मैं मेडिटेशन करनी है, वो मेरे को कहते थे नहीं करनी. मैं जिस चीज में, जैसे ही मैं सिक्लूजन में जाने की कोशिश करती थी, but then there would be times when he would make me do that as well. And yesterday I was trying to think this session through, that this is what we have to talk about, and I wrote down a couple of things about my path, और मैं सो गई उसके बाद दोपहर के time. And Guruji Maharaj said to me, he goes, तू तो हुन शिवा नु ते शक्ति नु तो भुल ही गई है. And I was like, wow. And then he used another word which I wrote down. He goes, the perfect storm has to be brewed into your soul. Then you will get to this path. And the third thing he said was different strokes for different folks. These are exact Guruji words. So I feel that if you talk about, I don't know whether you read the Shiv Puran, but in the Shiv Puran, how there is Ma Sati's story, how unke dad kaise unhappy hote hain, and because she's marrying Lord Shiva, and then unko kaise apni ahuti deni padti hai, and then after that she takes rebirth as Ma Parvati, and then Ma Parvati ko kya kya karna padta hai Shiva ko paane ke liye. So it is the same journey. You have to annihilate yourself completely. और ना तो माँ सती को लॉर्ड शिवा ने बताया था this is what you would have to go through. The path wasn't carved in front of her. She didn't know कि जब वो जा रहे थे अपने फादर के घर में जा रहे थे और वहाँ पे यज्ञ था और उनको नहीं बुलाया गया था. She really didn't know what was to come out of that. So I feel कि ये path of total surrender है. और इस बात पे हम सिर्फ गुरुजी के आगे अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं that गुरुजी, now this is the path that I would like to embark upon. और एक्चुअली तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. वो भी करने के लिए he has to put it in our heads that this is the path you have to take, and then we just leave everything to him. There is this beautiful story of
this is a devotee of Neem Karoli Baba. So he went to him and he said to him that, Baba, I want enlightenment. So please raise my Kundalini. So Baba says, no, just go to somebody down the road. There's a Baba sitting over there. Ask him to raise your Kundalini. And then he goes, no, Baba, I know you can do everything. You have to do it. And he goes, no, there's another Baba. Go to him. He'll sort out your problems. He will raise your Kundalini. And the third time when he says it, Baba just gets up. He puts a blanket over himself and he goes, I don't know anything. I know one thing, Ra and Ma. And then he goes, Ram Naam karne se sab pura ho jata hai. You know? So I feel कि जो मेरा पाथ था ना, वो पाथ ऑफ टोटल सरेंडर था. कुछ लोगों का पाथ होता है थ्रू डूइंग थिंग्स कॉन्शियसली, कुछ लोगों का पाथ होता है थ्रू डूइंग थिंग्स सबकॉन्शियसली, और ये हमारे डिजाइन पे बेस करते हैं गुरुजी. इफ आई वाज टू से कि अनुजा मेरा पाथ फला टाइम पे शुरू हुआ और फला टाइम पे खत्म हुआ, it is not that. He made me do Reiki, he made me do meditation, he made me do Kundalini yoga, he made me do a certain form of martial arts, he made me do I don't know how many kinds of hands-on healing. हालांकि ये आम तौर पे कहा जाता है संगत में कि गुरुजी हीलिंग्स के लिए मना किया करते थे. ये आम तौर पे कहा जाता है संगत में कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी मना करते थे. मुझे कितने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस गुरुजी ने कराए, और मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, है ना? And I am a therapist, and it's okay that I don't do it today for people, but even now जब मैं कई बार लेटती हूँ और मैं like, you know, I'm in my twilight zone, he takes me through a past life. And you know, so many dreams, Anuja. There was this one time I was sleeping. It was the afternoon. I used to wake up really early in the morning to pray. मैं गुरुद्वारे जाती थी और मैं गुरुद्वारे से आके मैं सो गई. And you know, it was like you're lying on the bed and then suddenly you drift into a sleep and you go into a very deep kind of a sleep. And Maharaj came and मेरे को कहते आके अपना मुंह खोल. मैंने मुंह खोला. He literally put it's like a white light, and I think that was the white light of consciousness that he put inside me. And he asked me, he says, "Hor vadda khol," and he puts that light inside me. I get goosebumps when I talk about this. And then Same here. So he beautiful. opens his mouth, पूरा अपना मुंह खोलते हैं. I think ये 2016 की बात होगी. और गुरुजी का मुंह इतना बड़ा हो जाता है. And inside his physical being, I'm seeing worlds. Wow. और इतनी beauty, and you know, mountains and galaxies and stars. And then he tells me to keep going deeper. Aur andar chale ja, aur andar chale ja. And I'm going through various little, you know, lanes and rivers, and कभी मैं ऊपर से देख रही हूँ नीचे क्या हो रहा है, कभी मैं नीचे से देख रही हूँ, और इतनी ब्यूटी और इतनी लाइट है उसके अंदर कि मेरी आंखें ऐसे हैं कि oh my God, I haven't seen this bright a light ever in my life. And the, you know, एक होती है नेचर में ब्यूटी जैसे आज हम देखते हैं, और एक होती है that beauty where you think that I haven't seen these colors ever in my life. The brightness of it. And then he takes me through that whole experience. And after that experience, he brings me out. And from that day on, things were different. Then another experience I remember, I was in London 2 years ago. And I had a dream where he takes me through various galaxies. So, you know, Guruji, जैसे मैं हमेशा हर सेशन में यही कहती हूँ कि गुरुजी DNA बदल देते हैं. There are so many times, Anuja, I'm lying down and I'm being told कि एक download हो रहा है, so you have to be still. मैं जागी होती हूँ. And when I wake up in the morning, I know that
some data that wasn't needed has been taken away, and some data that was needed has been put inside me, like just exactly what you would do into a computer, you know. So I feel कि ये path of surrender है, and the only way to get there is by surrendering everything to him and take whatever he brings onto your path as the path. अगर वो तुम्हें एक ऐसे relative के साथ मिला रहे हैं जिसको तुम कभी नहीं मिले और उनके साथ तुम्हारी problem है, then that is the path. That is the path. Okay. और अगर वो तुम्हें बैठ के कोई हीलिंग करा रहे हैं तो दैट इज द पाथ. अगर वो तुम्हें कोई पॉडकास्ट सुना रहे हैं तो दैट इज द पाथ. Whatever he has designed for you, for your particular design, is the path. And it could be something very mundane or it could be something very intense. और ये गुरुजी महाराज को पता होता है. एंड यू नो पीपल विल यूजुअली से दिल से कि ओ यू नो पहले तो हमारी जर्नी बड़ी अच्छी चल रही थी, मैं बड़ी अच्छी मेडिटेशन कर रहा था, अब ना मेरा मन नहीं लग रहा है. दैट इज ऑल्सो हिज प्लान बिकॉज द वेसल इज ओनली दैट मच. Yes. अब उन्होंने जो डाउनलोड करना था उसमें कर दिया. अब वो डाउनलोड को अपने अंदर काम करने देने का टाइम देना है हमने, सो दैट द वेसल कैन एक्सपैंड एंड ही कैन पुट इन मोर. So there will be a period of spiritual dryness as well. And you know, like I always say, that there are months that'll go by and you'll say to Guruji, Guruji, I haven't been able to squeeze a single tear of love in my eyes for you. What is going on? Itni dryness. Please help me. But the fact is that we're not supposed to have that. Because if we have that, वो उनको पता है कि कितनी dose of medicine needed है. अगर Correct. उससे ज्यादा हो जाएगा उससे ज्यादा हो जाएगा, will not be able to move on the path. वो तभी कहते हैं ना कि ये जो कुंडलिनी का रास्ता होता है, it's not an easy path. The kundalini can actually turn around to burn you because we don't know. And you know, when people go to other people to ask, it's like taking a monkey survey. मैं हमेशा कहती होती हूँ बच्चों को भी, हमारा monkey mind और monkey minds के पास जाता है पूछने के लिए that what is it exactly that you can tell me that worked for you which is going to work for me. We are all monkeys. Everybody is going to give things, or they're going to give us tactics that we can use according to how they are designed. पर वो उनके लिए path work की है, वो हमारे लिए नहीं करेगा. Correct. So we have to go with the flow of life as designed by Guruji Maharaj for us. Exactly. You know, the thing is this, Anuja, that Guruji Maharaj is not doing anything other than removing the blocks from our ego. हमने अपने आप को लेयर्स के साथ, लेयर्स ऑफ ईगो के साथ कवर किया हुआ है. और गुरुजी हर वेले एक होर परत ला दिंदे हैं, एक होर परत ला दिंदे हैं, एक होर, like you know, the whole point of this journey is that he takes away what is not needed rather than give you what is needed. So लोग कहते हैं हम और मेडिटेशन करेंगे, या मैं सोचूं कि मैं और रेकी करूंगी तो मैं और वो. No, but the only thing he is doing is creating situations, he's creating circumstances, he's giving us the paths that will remove the ego. You know, the Dalai Lama was asked by some foreign media, they said that Dalai Lama, people must really love you, that, you know, they come in hordes to meet you. Why is that so? And he goes, it's probably because all my life, all I've done is cared for people. Now look at his words. All my life, all I've done is cared for people. So beautiful. You know? It's a very pure and very high soul, obviously. Yeah, so that is the path. And what is Guruji designing? Always remove yourself. Remove yourself. हम ego को और strong करते हैं. What is it that I can do? Guruji कहते अपने आप ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ. Very true. And all of the things जो
आज की डेट में गुरुजी महाराज would say, आज लोग कहते हैं कि गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी ये नहीं कहते थे. There are no blacks and whites, Anuja. We are moving into the realm of energy जहाँ पे कोई भी black and white नहीं है. और ये मैंने कितनी बारी आई थिंक अपने पहले भी सत्संग में बताया कि गुरुजी महाराज इतनी बारी एक इंसान को एक चीज कहते थे, दूसरे को दूसरी चीज कहते थे. किसी को कहते थे तू कवाली तू कवाली सुनिया कर, किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ फोटो अगे डांस करया कर. एक टीचर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, एक लेडी शी सेज टू मी कि उनके सामने इतनी टीचर्स को मना किया कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो. And she's a teacher and she went to Maharaj and she goes, Maharaj मैं भी छाड़ता. And he goes, तेनू किन्ने किया तू कर. तो हमारा जो स्मॉल माइंड है ना, हम एक ही चीज लेते हैं. हम ये कहते हैं कि गुरुजी महाराज की ना ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस थी. And to this date, I actually say that please, let's not say anything. Our only job is to tell people that let Guruji Maharaj work through you. Yes. Whatever he is guiding you to. And sometimes people will say, जी मेरे को ऐसे फीलिंग हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि महाराज चाहते हैं कि नहीं चाहते. आप कर लो ना. अगर आप कर लोगे, if it manifests the way you expected it to manifest, Maharaj wants it. If it doesn't, you get no solace out of it, you leave it. या So, कल शाम को भी ना, जस्ट आई इंटरप्ट फॉर अ बिट. कल शाम को भी मैं सत्संग में बैठी थी तो शब्द चल रहा था, साहिब मेरा एको है भाई एको है. आपे मारे आपे राखे आपे लेवे दे, आपे नदर करे, सब कुछ आपे परमात्मा ने करना है. सो माय क्वेश्चन दैट टाइम आल्सो, द इंटरनल क्वेश्चन वाज, अगर सब कुछ परमात्मा ने अपने आप करना है तो क्या हमें कुछ करना है? और वी जस्ट हैव टू गो विद द लाइफ व्हिच इज क्रिएटेड फॉर अस. Anuja, it is so strange. So yesterday I was telling my daughter, मैं बैठी हुई थी ऐसे करके और एक पॉडकास्ट आया मेरी फीड पे. और I don't know that man. I haven't subscribed to his podcasts. And मैंने वो पॉडकास्ट को खोले. And I'm not the kind, मैं वही 4 पॉडकास्ट देखूंगी अगर देखूंगी. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सोशल मीडिया और फोन से दूर रहूं उतना बेटर है. So it's not that I keep hearing podcasts. So, I hadn't done anything all day. Like, I hadn't heard anything. I feel this is also a fast, that you shouldn't be hearing too much. Just as much as you shouldn't be talking too much, you shouldn't be hearing too much. So, ears ka bhi fast hota hai. To mujhe laga ki I'll go to YouTube. And I opened it and I saw this photo of a guy jo uske sath baith ke interview kar raha hai. And I don't know what happened to me. I had no idea why I clicked, why he made me do those things. But, if you were to know me personally, like my children know me personally, every single thing that I have done on this path to be where I am, that was that man's story. Wow. And every single time, Anuja, he would say that my heart would expand, my body would expand, my brain would expand. And it was like my energy field was so expanded in that presence. Uske words were so powerful. And because I had been through the exact same journeys, to the point कि उसने एक certain book mention की और उसमें एक certain sentence था और उस sentence के बारे में उसकी क्या feelings थी. Those are the exact feelings I had when I read that book. I mean, after that, मतलब मेरा नाइट सोने से पहले I do a little bit of my part. मेरा वो part भी I didn't feel the need for it. Like I was so expanded in such a state that I was saying to Guruji, "Wow, Guru, how do you even do it?" True. He's perfect. He's just perfect. I mean, I get goosebumps that you don't need any tools. You don't need me to find out what is it that I need to do. मतलब आप मेरे को ये बोल रहे, मतलब उसके बाद I was in such a state that I didn't need my part. I didn't need to close my eyes, and I just lay in bed and I was fast asleep.
Okay, I have to share one thing. How did Guruji Maharaj introduce me to Tinu Auntie? I have to share this after you. So एक बार मैं walk कर रही थी. This is August 2021. मैं walk पे कुछ सुन रही थी अपने अपने मोबाइल पे और मेरा मोबाइल का वो पॉडकास्ट या जो whatever I was बंद हो गया, कुछ और स्टार्ट हो गया. फिर वो बंद हो गया और फिर एक सत्संग शुरू हो गया और वो सत्संग था टीनू आंटी का. And I was just mesmerized listening to that satsang in August 21. This is almost, 4 years back. And I was like, wow, this is what I needed to listen to. So Guruji Maharaj makes sure what your soul wants, you listen to that, or whatever Yes, he wants you to. and the thing is this, that we think that this is an out and out war. हम spiritual रास्ते पे चलते हैं एक war strategy करके. Anuja, I want everybody to realize कि जब हम किसी भी path को strategize करने लग जाते हैं, हम वहाँ पे एक war create कर देते हैं. और ये path of war नहीं है. I always say to my children, I have already lost. There is no war. There is no strategy. गुरुजी महाराज के साथ कोई strategy नहीं है. गुरुजी महाराज के साथ हम ये नहीं कर सकते. ये रास्ता ऐसा है कि हमने अगर महाराज के रास्ते पे चलना है, we have to start with Guruji. I have already lost. But the strategy and the planning, the moment it starts, you start a war inside you because you become in a rush. If everybody, I get these questions so many times, or abhi pichle kuch dino se to itne ki Tinu auntie, please batao, how do we get there? Now, I came with a certain DNA. I came with a certain amount of, my balance sheet. Us balance sheet ko Guruji ne aage kaise leke jana tha with whatever he did that work. But I started at 22, 23. Today I'm 55. And Anuja, I have not done anything in my life other than follow the path. Yes. But did I know when I was following the path, did I know that this is how much time it's going to take? I was in a rush too. I was a youngster. I really wanted it. I would do everything in a rush. I would think कि मैं ये strategy करूँगी, त्राटक कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी. जो कुछ मुझे पता चलता था, मुझे लगता था मैं ये कर लूंगी तो फटाफट रास्ता साफ होता जाएगा. और आज जहां पे मैं हूं, I still know nothing. So many years, I still feel I know nothing. If anybody was to ask me, have I achieved it all? No, hell no. So who is to know where how we started was, we don't know where we are, we don't know where we have to get, and we cannot say how we are going to get there. The only thing we can say is whatever he brings you to is the path, whether it is your disease or it is your problems in your relationships, or it is following your everyday path. कई बार गुरुजी ऐसे भी कराते हैं कि इतना नून तेल लकड़ी में फंसा देते हैं कि तुम्हारे पास सोचने का टाइम नहीं होता. In the last podcast, I'd said that he made me have that Kundalini experience where I had dal and all of that before I went to Australia. And then after that, straight away he sent me to Sydney. And when I came back, I had the exact same experience. I had 99 fever for the next 2 years. And for the next 2 years, again, I was on dal and mungi di roti once a day. Until today, I have one meal a day. So I eat once in 24 hours. Because he does not allow me. Now, this is my path. If I was to say to somebody, this is your path, and it's not that this is something I consciously decided to do कि मैंने ऐसे करना है. मेरे से उससे ज़्यादा खाया जाता ही नहीं है. I can only eat once a day. So everybody's path is a bespoke path. Don't follow me. Don't follow anybody. Don't go and get the monkey survey. Just try and surrender more. Surrender more. Every day, wake up, जो जलाओ. गुरुजी महाराज से पूछो कि महाराज आज की.
How would you like me to lead my day today? And every day will become a practice. Every day will become a tool into your self realization. So Very beautiful. true. So I think we are out of time now. I just checked the Yes. time. It's नहीं, aunty, with you, there is no time limits. Path may very true. Path may vary to vary from individuals. Uh, yes. I have a small question, a small point of discussion between you and Anuja aunty. Anuja aunty, since you have already related in your previous satsangs about the past life, Yes. so I wish you to relate something related to past life in connection with whatever Tinu auntie have related before, please. No, I totally believe that my Guruji ने मुझे past lives इसीलिए दिखाई ताकि he can prove to me that I'm a soul. और कोई रीजन नहीं है पास्ट लाइफ तो पता नहीं कितनी होती है क्यों होती है बट आई बिलीव दैट उन्होंने मुझे प्रूव किया कि आई एम अ सोल ट्रैवलर आई एम अ विजिटर ऑन अर्थ और मैं बार बार आऊंगी उन्होंने मुझे प्रूव किया कि आई एम एनर्जी आई विल नेवर डाई ही हैज शोन मी 3 डेथ्स so abhi bhi Guruji is just relating me to only light and energy. That's what he's teaching me about. Even kal sham ko jo satsang tha, it was a very powerful satsang. And sitting in the satsang, he gave me a very high energy experience. So now I believe that, when you have these experiences of your energy body, तब आप बिलीव करने लग जाते हो कि ये जो बाकी उन्होंने प्लॉटिंग की हुई है आपकी लाइफ की इज ओनली फॉर सम टाइम but your true source is your energy and your light. Even जो लास्ट उन्होंने शिवरात्रि पे मुझे एक्सपीरियंस दिया टीनो आंटी आई वुड लाइक टू शेयर दैट बिकॉज यू शेयर दैट एक्सपीरियंस अबाउट लाइट सो मैंने एक बार लास्ट ईयर मेडिटेशन में देखा था कि मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं बड़े मंदिर को कब मैं प्रदक्षिणा कर रही हूँ तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी समाधि मंदिर वाली फोटोग्राफ से निकले हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे बट द विजन एंडेड देयर इस शिवरात्रि पे इट स्टार्टेड विद दैट विजन कि गुरुजी आगे आगे और मैं पीछे पीछे और मैंने देखा एक छोटा सा डोर है जिसके अंदर गुरुजी महाराज घुसते हैं उनके पीछे पीछे मैं भी घुसती हूँ एंड वहां देयर इज नथिंग बट लाइट एंड लाइट so, when Guruji Maharaj gives you these kind of experiences, you realize what you are actually and what he's taking you to actually. Step by step hoga, slowly hoga, as per his design hoga. But he will take you up. जैसे तीनों आंटी ने बोला अब क्या करना है गुरुजी महाराज आप बताइए और he will take you. So even I Very totally good. believe that he is leading us. He is our guru. हमें सिर्फ जो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है हमारा लाइफ गृहस्थ आश्रम में रह के सब कुछ करना है लास्ट इवन एक सत्संग पे मेरा आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ सत्संग एट होम इन सितंबर एंड उस दिन मैंने गुरुजी महाराज से पूछा गुरुजी महाराज अब ना मैं सत्संग बंद कर दूं अब मैं क्या सिर्फ मेडिटेशन करूं आप ना मुझे प्लीज शाम तक जवाब दे दीजिएगा एंड कैन यू बिलीव इट एक संगत आंटी आई और मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और उन्होंने मुझे विश्वामित्र और वशिष्ठ की पूरी कथा सुना दी जिसमें वशिष्ठ जी बोले कि उन्होंने एक घड़ी के सत्संग पे धरती को रोक दिया आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट कथा Yes. अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग कथा बट Yep. उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे ये जवाब दिया कि तुम्हें सत्संग करना ही करना है और उसके बाद से मैंने उनसे कभी ये क्वेश्चन दोबारा नहीं किया मैं जितने Past life. सत्संग कर सकती हूँ मैं करती हूँ मैं जितने सत्संग पे गुरुजी महाराज लेके जाते हैं मैं जरूर जाती हूँ बिकॉज दिस इज द पाथ ही हैज चोजन फॉर ऑल ऑफ अस Yes. And yet, at the same time, he will also design, like, he will put you through periods where he will make you fast on people. Ki, tera koi contact nahi hai with the outside world. And he has put me through that for 2 years. He did not let me have any sangat. And for 2 years, he did not let me go out to any sangat. So what I'm trying to say is कि ये भी किसी को कहना आप और सत्संग करो आप और सत्संग करो आप सत्संग करो आप गुरु जी को बुलाओ leave it to him
लीव Yes. इट टू हिम. अगर वो सत्संग करवा रहे हैं आपके घर में, वो भी उनकी मर्जी से. अगर वो नहीं जाने दे रहे, डोंट थिंक इट्स अ पनिशमेंट. गुरुजी Yes. महाराज कितनी बार ये कहा करते थे कि साल साल, यू नो व्हेन ही वुड हैव, जब तुम्हारी सोल की सबसे ज्यादा असेंशन होनी शुरू होती थी ना, वो उस टाइम पे तुम्हें अपने पास आने के लिए मना कर देते थे. उसका रीजन जो मुझे अभी समझ आया, जो आज की डेट में मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है दिस विल चेंज, बिकॉज अगर हम उनकी प्रेजेंस में अपना कामा प्रोसेस करना शुरू करते हैं, बाय द फैक्ट दैट ही इज प्रेजेंट ओवर देयर, हम अपना कामा फिर स्किप कर जाते हैं, बिकॉज महाराज उत्थे बैठे हैं. बिल्कुल ठीक बात Right. So he wants या skip कर जाते हैं, या महाराज अपनी मर्सी नाल ओनु बर्न कर दिंदे हैं. And he does not want us to do that. He does, उनको पता है कि अगर मैं इसका ये कामा बर्न कर दूंगा इस टाइम पे, तो इसकी सोल डेवलपमेंट नहीं होगी, ये सीखेगी नहीं, ये वही गलतियां करेगी जो ये करती आई है. So now she needs to go away and process, because by the mere fact of being in his presence, what tends to happen is we will bypass karma, or we will burn our karma. But कुछ चीजें हमें तराशने के लिए जरूरी हैं, वो उतनी डिफिकल्टी जरूरी हैं. जैसे वो कैटरपिलर का एग्जांपल देते हैं, that to break open to become a butterfly, it has to work very hard. It's death for it. Yes. And Yes. you have to die many a deaths. This path is not easy. You know, when he begins to burn your karma, it's not easy. It's very, very hard. And he will make sure. इसलिए मैं कहती हूँ कि small doses में, don't say कि गुरुजी मेरे को सत्संग पे नहीं बुलाया, don't say गुरुजी आप सत्संग क्यों नहीं करा रहे हो घर में. जिस हाल में रखें खुश रहें, जिस हाल में बिल्कुल, रखें. बिल्कुल. हाँ. Very right. Just say that Yes. you are the path, Guruji, not me. Bas. It's only He- Guruji Maharaj who have to design our paths, who have Absolutely. to very You good. will know from inside कि आपको जाना है कि नहीं जाना है. गुरुजी महीने में सिर्फ एक बार सत्संग कराते हैं, और बहुत बार ये भी कहते हैं कि फैमिली के साथ बैठ के आज हमें एंजॉय करना है. इट्स नॉट, वी डोंट हैव टू रन आफ्टर सत्संग्स, बट जहां वो ले जाएं, इट्स हिज मर्जी, जहां उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है. मेडिटेशन भी कराते हैं गुरुजी जब हो सके. बट यस, लाइक तीनू आंटी सेड, हर एक के लिए अलग पाथ गुरुजी का. You know, I'll just wind it up with a little one-liner. My daughter and I went to Rome for a holiday, 4 days holiday. It's a very big experience. फिर कभी बात करेंगे. But what I'm trying to say was that whole trip was a satsang. Okay. एग्जैक्ट सेम ड्रीम मुझे आता था, और एग्जैक्ट सेम ड्रीम उसको आता था. हम दोनों साइड, यू नो, वी वुड बी स्लीपिंग बिसाइड्स ईच अदर, महाराज का. सो वो पूरा ट्रिप ही सत्संग था. और हमें ऐसे लगा उस ट्रिप के बाद कि हम तो हवा में ही चल के आ गए हैं, महाराज ने तो ऐदा ही चक के रखे. Wow. तो वो महाराज भी तो हवा रोम में पहुंचा चलते के थे. भी थानू सत्संग करा देंगे हैं. Yes, yes, yes. He's Maharaj- everywhere. He's everywhere. He shows his presence everywhere. Yes. Yeah. बहुत ही अच्छा सेशन आज का था. अनुजा आंटी, तीनू ढिलो आंटी, थैंक्स अ लॉट. Thank गुरु you महाराज so much, Tina. कृपा. शुक्राना you. गुरुजी महाराज का हम सबको इकट्ठा करने के लिए. Thank you so Thank you. much. जय Again, गुरु जी, जय गुरु जी. Yes, अंकल. thanks a lot.